क्षेत्ररक्षण इथे सजवले गेले साई आदर्श पावस संघाच्या माध्यमातून. तर दुसऱ्या बाजूला तुळजा स्पोर्ट संघाला ही दुसरी संधी असेल. या संधीचा इथे फायदा उचलावा लागेल आणि फायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी इथे तुम्हाला मात्र स्वतःचं सामर्थ्य आणि स्वतःची क्षमता इथे दाखवणं गरजेचं आहे. 2-4 पावलांचा घेतलेला रनअप आणि याच्या माध्यमातून पहिलाच फेकला गेलेला हा चेंडू इथे मिळालाय. एक धाव इथे मिळेल. एका धावेने स्वतःचं आणि संघाच्या खात्याचा श्री गणेशा करताना प्रणय मुरकर इथे आपण पाहतोय. पहिलं षटक अतिशय लाईन लेंथचा जर विचार केला तर दर्जेदार अशी गोलंदाजी इथे म्हणावी लागेल ती यावेळी प्रवीणच्या माध्यमातून. स्ट्राईकला यावेळी इथे आपण पाहतोय कौस्तुभ हातीसकर, ज्याची बॅट आपल्याला या आधीच्या सामन्यामध्ये तडपलेली पाहायला मिळाली नाही. इथे मात्र याला इथे आपला दमखम दाखवावा लागेल. कौस्तुभ इथे पाहायचंय पुढच्या चेंडूंचा कशा पद्धतीने इथे सामना करतोय. दुसरा सेमीफायनलचा सामना आहे. दुसरी संधी इथे मात्र मिळाली ती तुळजा स्पोर्ट संघाला. प्रवीण यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर टाकलेला चेंडू ड्राईव्ह केलाय. कव्हरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अमित पवार चेंडूवरती येतोय. तद्वर घेतली गेली ती एक धाव. एका धावेने धावसंख्या इथे आपण पाहतोय ती 2. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती आहे. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतोय यावेळी प्रणय मुरकर. इथे पाहायचंय या षटकामध्ये आणखीन किती धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. प्रणय मुरकरला इथे शांत ठेवलं जाईल का इथे गिअर चेंज केला जाईल, आक्रमक होईल हे पाहायचंय. यावेळी टाकलेला चेंडू लो फुल टॉस होता. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अमित पवारच्या माध्यमातून इथे चेंडू केला गेला गॅदर. एकच धाव इथे मिळेल. राईट लेफ्ट कॉम्बिनेशन असल्यामुळे बेस्ट ऑफ 5 फिल्टर्स इथे मात्र वारंवार दिशा बदलताना आपल्याला दिसतील. पोझिशन्स बदलताना इथे दिसतील. अमित पवारला बेस्ट ऑफ कॅचिंग पोझिशन्सला इथे वारंवार घेतलं जात आहे. त्यामुळे डीप मिड विकेटच्या दिशेने वारंवार आपल्याला अमित पवार इथे फिल्डिंग करताना पाहायला मिळेल. शुभम मुरकरला मात्र इथे वारंवार क्षेत्ररक्षणाची जागा बदलावी लागते. पुन्हा एकदा ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू होता ऑफ स्टिकच्या बाहेर. वाईडलँड यॉर्क इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय. एकच धाव इथे मिळते. षटक क्रमांक पहिलं इथे होतंय समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपण पाहतोय बिनबाद 4. संयमी फलंदाजीने केलेली सुरुवात या जोडीकडनं आपल्याला पाहायचं. येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये आणखीन किती धावा इथे उभारल्या जातील. एक विशाल लक्ष इथे ठेवावं लागेल आणि तरच कुठेतरी तुळजा स्पोर्ट संघ फायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सज्ज होऊ शकतो. ज़रूर एक अच्छी पारी यहाँ पर करनी होगी. जो गलतियाँ पिछले मैच में की थी उसको दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहेंगे और ज़रूर यहाँ पर जो है प्रणय मुरकर को बीच मैदान में बने रहना होगा. कौस्तुभ हातीसकर भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो एक अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने की कोशिश रहेगी. ज़रूर अपोनेंट टीम में उनके भाई भी खेल रहे. प्रणय मुरकर के भाई शुभम मुरकर खेलते हुए नजर आ रहे और इस समय गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान अमित आते हुए अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे. पहली ओवर में मात्र 4 रन खर्च के किफायती गेंदबाजी रही प्रवीण दूल की. इस समय अमित खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आते हुए सामने रहेंगे. कौस्तुभ पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी. एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला और अपने हाइट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़रूर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़े से बीट हुए थे कौस्तुभ. यही खासियत है और उन्होंने कहा हम कम से कम रनों पर रोकने का प्रयास करेंगे 50-55 के करीब. लेकिन यहाँ पर कौस्तुभ जिसके लिए उनको जाना जाता है वैसी बल्लेबाजी कर पाएंगे नहीं, देखना होगा. और फिर गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर खेला है. स्क्वायर लेग की दिशा में यहाँ पर जो है फील्ड कर लिया गया है. 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए रन संख्या बढ़ेगी इस समय 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर. प्रणय मुरकर इस समय जो है स्ट्राइकिंग एंड पर है. अब तक चौका या छक्का उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला. पिछले मैच में 35 रनों की शानदार पारी खेली थी तो वैसे ही पारी यहाँ पर सजानी होगी. देखिए उस बार आपको मौका मिला था फिर से एक बार खेलने का, लेकिन इस बार नहीं. जो भी हारेगी सीधा प्रतियोगिता से बाहर जाएगी. अब नॉकआउट मुकाबले हैं और जो भी जीतेगी सीधा वेदा स्पोर्ट्स के साथ ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेलने के लिए सज्ज होगी. कौन सी टीम रहेगी, साई आदर्श पावस या तुळजा स्पोर्ट्स की टीम? अमित पवार बॉलिंग मार्कवरती. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून 30 षटक, दुसरं षटक प्रगतीपथावरती आहे. आतापर्यंत 2 चेंडू याच्या माध्यमातून इथे फेकले गेले. धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती फक्त 5 धावा.
कुठेतरी चांगली गोलंदाजी इथे म्हणावी लागेल साई आदर्श पावस संघाच्या माध्यमातून. प्रणय मुरकरला इथे रोखलं गेलंय. या आधीच्या सामन्यामध्ये जी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती ती फलंदाजी इथे मात्र या षटकामध्ये पाहायला मिळते का हे पाहायचं आहे. बॅकफूटवरती येतोय एक सुंदर फटका नजरेखाली घेतला गेला आणि त्यानंतर हलक्या हाताने खेळून काढलेला हा फटका एक धाव देऊन जातोय. एका धावेने स्ट्राईक इथे रोटेट होईल. स्ट्राईक येईल ती कौस्तुभ याच्याकडे. कौस्तुभला इथे मात्र आपण या महत्त्वाच्या दिवशी सुपर संडेमध्ये फक्त आणि फक्त शांत राहिलेलं पाहायला मिळालं आहे. याला कुठेतरी आक्रमण करण्याची आवश्यकता आहे. यानंतर तुम्हाला 2024ची वाट बघावी लागेल. त्यामुळे इथे मात्र तुम्हाला जे संधी मिळाली या संधीचा फायदा घेणं आवश्यक आहे. अमित पवार बॉलिंग बारवरती राईट हँड राऊंड द विकेट. कौस्तुभ खेळण्यासाठी ती सज्ज. पुन्हा एकदा लो फुल टॉस इथे बॅटवरती खेचला गेलाय. चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने इथे ट्रॅव्हल होतोय. त्याचवर खेचली गेले एक धाव. एकच धाव संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडली जाते. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती फक्त आणि फक्त 7 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी साई आदर्श संघाकडून आणि आदर्श असा खेळ यावेळी या सर्व खेळाडूंकडनं पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक दर्जेदार केवळ 4 धावांचं. त्यानंतर बॉलिंगचा भार इथे सोपवला गेला तो अमित पवारवरती आणि अमित पवारच्याही माध्यमातून चांगली गोलंदाजी. एका बाजूला प्रणय मुरकर तुळजास्पोर्ट संघाकडून खेळताना तर साई आदर्श संघाकडून शुभम मुरकर इथे आपल्याला खेळताना 2 भाऊ एकमेकांच्या विरुद्ध खेळताना इथे आपल्याला पाहायला मिळतात. अमित पवार पुढचा चेंडू घेऊन शुभम मुरकर इथे सज्ज होईल. यावेळी टाकलेला चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर. पुन्हा एकदा सही इथे सन्मान दिला गेलाय. ड्राईव्ह केलाय. कव्हरच्या दिशेने चेंडू इथे ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते अप्रतिम. एकच धाव संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडली जाते. धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 8 धावा. कोणताही मोठा फटका अजूनही या दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला नाहीये. यावेळी कोणती रणनीती इथे आखली गेले हा पडलेला प्रश्न उपस्थित सर्व दर्शकांसमोर. का हे फलंदाज आक्रमण करत नाहीयेत? कारण पॉवर प्लेचं पहिलं षटक धावा निघाल्या त्या फक्त आणि फक्त 4 आणि दोन्ही हुकमी फलंदाज. इथे मात्र फटका खेळला गेलाय मोठा. मिड विकेट आणि काव कॉर्नर दोघांनाही बेदून चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार. पहिला चौकार या इनिंग मधला इथे निघालाय कौस्तुभच्या बॅटमधनं. अमित पवारवरती केला प्रहार आणि इथे धाव्या मिळाल्या 4. षटक क्रमांक 2 इथे होतोय समाप्त. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 12. 6ची धावगती इथे राखली गेले. रन रेट इथे वाढवावं लागेल आणि साधारण 70 ते 75 धावा इथे कशा उभारल्या जातील याचं कॅल्क्युलेशन खेळलं, याचा अंदाज घेऊन खेळलं इथे खूप आवश्यक आहे. टीम मीटिंग इथे होईल, चर्चा होईल. तिसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये सोपवलं जाईल याची बातचीत होईल आणि खेळण्यासाठी इथे सज्ज होतील. एका बाजूला प्रणय मुरकर तर दुसऱ्या बाजूला शुभम मुरकर आणि गोलंदाजी मार्कवरती यावी येतोय. प्रणय याला रोखण्यासाठी त्याचेच धाकले बंधू धाकले सरकार शुभम मुरकर. जरूर अमित ने कहा था कि प्रणय मुरकर को रोकने के लिए हमारे पास शुभम मुरकर है, यानी कि भाई के खिलाफ भाई को इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है. तो उनके इस भरोसे को क्या पूरा कर पाएंगे या नहीं देखना होगा. इस समय देखिए अब जोखिम तो उठाना पड़ेगा प्रणय मुरकर को, क्योंकि यहाँ से रन बनाने होंगे. 2 ओवर में मात्र 12 रन बने हैं और इस समय इस ओवर में आक्रमण होता हुआ जरूर नजर आएगा. शुभम इस समय पहली गेंद को भेजा है तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. 106 मीटर का लंबा छक्का लगता हुआ. क्या बात है. देखिए यहाँ पर रिश्तेदारी नातेदारी ग्राउंड के बाहर, घर के अंदर, मैदान के अंदर तू अलग मैं अलग, और वही दिखाते हुए अपने टीम के लिए जो हो सके अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस समय शुभम. और देखा जाए तो यहाँ पर प्रणय, दोनों भी एक दमदार खिलाड़ी है और दोनों ने भी रत्नागिरी क्रिकेट में एक अलग ऊंचाई पर अपना नाम लिखा है. और पहली गेंद का स्वागत किया है इस समय छक्के के साथ. रन संख्या बढ़ेगी इस छक्के की बदौलत 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और यहाँ पर अब प्रणय मुरकर ऐसे ही लंबे स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे. गेंदबाजी जो कर रहे हैं शुभम मुरकर बड़े भाई है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो है अब प्रणय मुरकर छोटे भाई है. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. पहली गेंद को तारामंडल में भेजा और वो सिर्फ और सिर्फ गेंदबाज के रूप में उनको देखेंगे, ना कि मेरा भाई गेंदबाजी कर रहा है, ऐसा नहीं. क्योंकि उनको पता है इस समय मेरे टीम के लिए ज़रूरत है रनों की. और दूसरी ओर शुभम की अगर बात की जाए तो वो कहेगा मेरे टीम के लिए विकेट की ज़रूरत है.
और यहाँ से वो गेंदे डॉट भी निकालते तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में प्रणय मुरकर बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इस ओवर में अब लंबे स्ट्रोक जड़ने की कोशिश करेगा। और पहली गेंद पर उन्होंने साबित भी किया है कि मैं ऐसे स्ट्रोक इस ओवर में जड़ने की कोशिश करूंगा। 18 रन बने हैं। अब इस समय तीसरी ओवर की दूसरी गेंद शुभम की, इस बार भी पटकी हुई गेंद थी और देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफल हुए थे, जिसकी वजह से ओमकार जी पोयरेकर सर इनका सेफ गेंद का इशारा आता हुआ। और इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं चतुराई की गेंदबाजी शुभम करते हुए अपने टीम के लिए। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, इस बार काफ़ी दूर की थी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगी 19 रन, 19 रन नो लॉस। तो थोड़ी सी बचने की कोशिश कर रहे हैं, विकेट में नहीं करेगी गेंद, विकेट के से थोड़ा सा दूर ही करना चाहेंगे और ज़रूर इससे पहले कामयाबी मिली थी लेकिन उसके बाद वाइड आता हुआ। इस बार हल्के हाथों से खेला है, अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड करते बता रहे हैं कि यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा अनुभव मेरे पास है, तो वही अनुभव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि छक्का पहली गेंद पर जरूर उन्होंने जड़ा था लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ से जो है अच्छा कमबैक करते हुए रन संख्या बढ़ी 19 रन। पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी हवा में खेला है, डीप स्क्वायर में फील्डर वहां पर तैनात थे और इस बार थोड़ी सी गलती हुई है, गेंद जाती भी देखना होगा क्या यहाँ पर फैसला दिया जाता है। लाइनमैन वहां पर मौजूद थे और इशारा आता हुआ 4 रनों का। इस चौके के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 23 रन, 23 रन कैच बन सकता था लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हवा ने उस गेंद का रुख मोड़ लिया जिसकी वजह से दिक्कत हुई फील्डर को। 23 रन बने हैं इस चौके की बदौलत। अच्छी पारी इस समय सजाते हुए शोर की अगर बात की जाए तो एक छक्का और एक चौका यहाँ पर प्रणय मुरकर के बल्ले से देखने को मिला है और इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है और 2 गेंदों पर 2 लंबे स्ट्रोक जड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं फील्डर ने थोड़ी सी गलती की जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये चौका निकलता हुआ। तीसरी ओवर की 5वीं गेंद लेकर शुभम मुरकर गेंदबाजी मार्ग पर 4-5 कदमों का रनअप लेकर। इस समय अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, डीप मिड विकेट में गेंद को यहाँ पर जो है फील्ड कर लिया गया है। 1 रन यहाँ पर पूरा किया और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 224 रन। जरूर है सिंगल सिंगल जाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी यहाँ पर साई आदर्श पावर्स को और दूसरी ओर तुलजा स्पोर्ट्स को लंबी पार यहाँ पर सजानी होगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कौस्तुभ हाथीसकर यहाँ पर थोड़े से धीमे खेल रहे हैं, अब तक उनके बल्ले से 8 रन बने हैं जिसमें एक चौका शामिल है। तो अब तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर शुभम, हवा के अगेंस्ट आपको खेलना होगा या हवा के साथ साथ चलना होगा, ये आपके बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। तो ज़रूर यहाँ पर जो है फील्ड सजाई जा रही है। आखिरी गेंद तीसरी ओवर की शुभम मुरकर की और सामने रहेंगे कौस्तुभ, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस प्रतियोगिता में। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से किया, पॉइंट की दिशा में यहाँ पर गेंद को फील्ड किया, जब तक कि थ्रो करते 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदें देखना होगा कितने रन बनाते। राजा सर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा है साई आदर्श पावर्स के गेंदबाजों ने इस समय बल्लेबाजों को। अप्रतिम गोलंदाजी, चांगली दिशा, चांगली लाईन आणि प्रणयला कुठेतरी रोखण्यात पहिली 2 षटकं इथे आपल्याला यशस्वी झालेली पाहायला मिळाली, परंतु त्यानंतर बॉलिंग मार्कवरती आलेला शुभम मुरकर आणि शुभम मुरकरवरती केला गेलेला हल्ला यावेळी प्रणय मुरकरच्या माध्यमातून आणि त्यामुळेच कुठेतरी एक मोठी झेप इथे मात्र धावसंख्येने घेतलेली पाहायला मिळाले। 3 षटकांचा खेळ इथे झालाय समाप्त। धावसंख्या इथे आपण पाहतोय ती 25, येणारे चेंडू आहेत ते 18 आणि या 18 चेंडूंमध्ये आणखीन 40 ते 45 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जाणं खूप गरजेचं असेल, तरच या क्रीडांगणावरची सन्मानजनक धावसंख्या आणि साई आदर्शला रोखणारी धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। धन्यवाद धन्यवाद। पॉवर्स प्रीमियर लीग आणि यापुढील जो होणारा सामना आहे रेस्ट ऑफ पीपीएल विरुद्ध बेस्ट ऑफ पॉवर्स। रेस्ट ऑफ पीपीएल चे कर्णधार यतीश बिर्जे यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं या ठिकाणी आणि पॉवर्स प्रीमियर लीग 2023 या अंतिम दिवसामध्ये आपल्याला जो या ठिकाणी 3 ओव्हर झाल्यानंतर ड्रिंक्स ब्रेक या ठिकाणी जो देण्यात आलेला आहे तो म्हणजे तनुजी मुळे यांचे खूप खूप आभार।
अमित पवार वैयक्तिक दुसरं, संघाकडून चौथं षटक घेऊन आणि समोर आहे तो कौस्तुभ. इथे फटका फसलाय, हवेमध्ये चेंडू, अमित पवार चेंडू खाली आणि इथे पहिला पकडला गेलाय झेल. बिघडतोय खेळ तुळजा स्पोर्ट संघाचा. इथे तुळजा स्पोर्ट संघाला दुसरी संधी मिळाली सेमीफायनल खेळण्याची, परंतु कामगिरी आपल्याला ज्या पद्धतीने होणं आवश्यक आहे ती मात्र इथे पाहायला मिळाली नाहीये. थोडासा निराश असेल तो अभि इंदुलकर, परंतु कौस्तुभ इथे येतोय पॅव्हलियनच्या दिशेने. अप्रतिम गोलंदाजी अमित पवारच्या माध्यमातून, चांगला ठेवलेला चेंडू अक्रॉस द लाईन बॅकफुटवरती येऊन खेळण्याचा इथे प्रयत्न होता. प्रयत्न इथे फसला, चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळाला आणि एक दर्जेदार झेल पकडताना अमित पवार इथे आपण पाहिलंय. पहिला धक्का इथे मिळतोय तुळजा स्पोर्ट्स संघाला कौस्तुभच्या माध्यमातून. सुरेख गोलंदाजी, षटक क्रमांक 4 इथे प्रगतीपथावरती आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती इथे दिला गेलाय तो तुळजा स्पोर्ट्स संघाला हादरा. पॉवर्स प्रीमियर लीग हा सामना झाल्यानंतर इथे मात्र रणसंग्राम क्रिकेटचा अनुभवायला मिळणार आहे. बेस्ट ऑफ PPL वर्सेस रेस्ट ऑफ पॉवर्स. सर्व सिनियर खेळाडू आणि ज्याने एक पर्व एक दशक या टेनिस क्रिकेटवरती राज केले ते सर्व खेळाडू आपल्याला या शारजाच्या हिरवळीवरती, या शारजाच्या अप्रतिम क्रीडांगणावरती 360 अँगलमध्ये फटकेबाजी करण्यासाठी इथे मैदानात उतरलेले पाहायला मिळतील. आपला दमखम दाखवताना पाहायला मिळतील. देव्या पाटील कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. देव्या पाटील एक त्वरित आपण या ठिकाणी व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे. देव्या पाटील. धावसंख्या 1 गडी बाद 25, षटक क्रमांक 14 प्रगतीपथावरती आणि इथे अमित पवार पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने वारंवार लगावण्यात जाणारा हा प्रयत्न इथे पाहायला मिळतोय. या आधीच्या सामन्यामध्येही हाच फलंदाज अशाच पद्धतीने फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसला होता आणि हे अमित पवारनं त्याने जाणलंय. त्यामुळे ऑफस्टिकच्या बाहेर इथे विकेट घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाहीये, कारण 6 षटकांचा खेळ, इथे विकेटला महत्त्व नाहीये, परंतु इथे डॉट बॉल काढणं खूप गरजेचं आहे आणि तेच इथे अमित पवारच्या माध्यमातून या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय. स्टिक्स टू स्टिक गोलंदाजी इथे मात्र तो करत नाहीये. फलंदाजाला रोखण्यासाठी वापरलं जाणारे हे तंत्र, वापरली जाणारी ही बुद्धी इथे आपल्याला साई आदर्श संघ पॉवर्स संघाच्या माध्यमातून PPLच्या या 9व्या पर्वामध्ये पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू घेऊन अमित पवार समोर इथे फलंदाज आहे स्ट्राईकला तो केतन. यावेळी टाकलेला चेंडू फटका हवेमध्ये उंच आहे, परंतु दुरी मात्र पाहिजे तेवढी नाही. क्षेत्ररक्षण अतिशय अप्रतिम असदच्या माध्यमातून पकडला गेलाय झेल. बिघडतोय पुन्हा एकदा खेळ तो तुळजा स्पोर्ट संघाचा. पॅव्हिलियन मध्ये इथे परतेल तो यावेळी केतन निराश करतोय आपल्या संघाला. दुसरा धक्का, दुसरा हादरा, दुसरा मोहरा गारद होतोय तुळजा स्पोर्ट संघाचा. जरूर ये जिम्मेदारी अब अभी इंदुलकर ने ली है, खुद कप्तान बीच मैदान में आते हुए. देखिए पिछले मैच की तरह ही सिचुएशन बना है, अभी भी प्रणय मुरकर बीच मैदान में ही हैं और देखना होगा अब किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं. और कप्तान ने पूरा भरोसा दिखाया है अपने खुद पर, वैसी पारी यहाँ पर खेलना चाहेंगे. अब तक अगर देखा जाए तो रन संख्या बनी है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और अमित इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. कैप्टन वर्सेस कैप्टन वाला मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा. आते ही स्ट्राइकिंग एंड पर अभी रहेंगे. अगर शॉर्टफुट देखा जाए तो उनकी जर्सी के ऊपर AB ये नाम आप देख सकते हैं. AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका का एक ज़बरदस्त खिलाड़ी. अब यहाँ पर देखना होगा तुलजा स्पोर्ट्स की ओर से ये कप्तान अभी इंदुलकर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. अभी तो गेंदबाजी मार्ग पर अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. जकड़ कर रखा है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अमित पुढचा चेंडू घेऊन अभिसाठी. यावेळी टाकलेला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये अलॉंग द कार्पेट फटका खेळलाय. काव कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू इथे ट्रॅव्हल होतोय. शुभम मुरकर चेंडूवरती आलाय, तद्वर घेतली गेले एक धाव. एका धावेने अभि मात्र स्वतःचं इथे खातं ओपन करताना दिसलाय, परंतु प्रणय मुरकरला इथे मात्र आपल्याला गिअर चेंज करावा लागेल, आक्रमक व्हावं लागेल, मोठे फटके इथे खेळावेच लागतील, कारण 60+ धावसंख्या कमीत कमी सन्मानजनक इथे उभारणं आवश्यक आहे. त्यामुळे एका फलंदाजाला इथे हल्ला चढवावा लागेल. जर का आपण असे सिंगल डबल जर खेळत राहिला तर कुठेतरी साई आदर्श संघाकडे इथे संधी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे तुम्हाला इथे स्वतःचं सामर्थ्य दाखवण्यासाठी मिळालेली ही दुसरी संधी आणि या दुसऱ्या संधीचं इथे तुम्हाला सोनं करायचं आहे. जस्ट डू और डाय, डोंट क्राय. इथे लढायचं, रडायचं नाही, तर इथे लढायचं आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत इथे प्रयत्न करायचे आहेत आणि ते प्रयत्न इथे करावे लागतील ते तुळजा स्पोर्ट्स संघाला. अमित पवार इथे क्षेत्ररक्षण सजवतोय, कारण याला माहिती आहे समोरच्या फलंदाजामध्ये काय ताकद आहे, काय क्षमता आहे, काय पॉवर आहे आणि कशा पद्धतीने तो फलंदाजी करतो. त्यामुळे बेस्ट ऑफ 5 कॅचिंग पोझिशनला इथे घेतले गेलेत. अमित पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी टाकलेला चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॅकफुटवरती येऊन खेळण्याचा इथे प्रयत्न, परंतु पंचांच्या माध्यमातून इथे येतोय डॉट बॉल.
अमित पवार वाईड लाईन यॉर्क वाईड लाईनची जी लाईन आहे त्याच्या थोडासा आतमध्ये ठेवलेला हा टप्पा होता. चांगली रणनीती अलॉंग द बॉडी इथे डिलिव्हरी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो अमित प्रणयपासून दूरवरती चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, संत गतीने टाकलेला चेंडू. शॉर्ट पिच होता, इन स्विंग केला, सन्मान दिला गेला. कव्हरच्या दिशेने चेंडू इथे ट्रॅव्हल झालेला पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक 4 इथे होतंय समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय 2 गडी बाद 27. केवळ 3 धावा या षटकामध्ये दिल्या गेल्यात. अतिशय केवळ 2 धावा या षटकामध्ये इथे दिल्या गेल्यात. दर्जेदार गोलंदाजी अमित पवार याची महत्त्वाच्या क्षणी, महत्त्वाच्या मॅचमध्ये, महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये इथे पाहायला मिळाले. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 2 गडी बाद 27. येणारे चेंडू आहेत 12 आणि या 12 चेंडूमध्ये किती धावा आणखी संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील हे पाहावं लागेल. जरूर देखिए डू और डाई वाला ये मुकाबला है और 12 गेंदों पर 30-35 रन यहाँ पर जोड़ने होंगे. जो कार्य पिछले 4 ओवर में नहीं बनाए वो आने वाले 2 ओवर में पूरा करना होगा. और अब प्रणय मुरकर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे. शुभम मुरकर जिन्होंने पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद उन्होंने मात्र 13 रन खर्च किए थे. लेकिन इस बार क्या उसका जवाब अपने बल्लेबाजी से दे पाएंगे प्रणय, ये आने वाला समय तय करेगा. रन संख्या भरी में मात्र 27 रन. और अमित पवार की अगर बात की जाए तो किफ़ायती गेंदबाजी रही है, जिन्होंने 2 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए इस 4थी ओवर में. और अब 5वां ओवर लेकर शुभम मुरकर व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर अंपायर की दाहिने ओर से यानी कि अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. सामने रहेंगे प्रणय मुरकर. भाई वर्सेस भाई वाला ये मुकाबला देखने को मिल रहा है. 5वीं ओवर की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद थी. जी हाँ, इस गेंद को भेजेंगे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. क्या बात है, क्या बात है. पिछले ओवर की भी शुरुआत की थी छक्के के साथ और इस ओवर की भी शुरुआत की है छक्के के साथ. यानी कि अब वो यहाँ से रुकने वाले नहीं है और कहीं ना कहीं वो बता रहे मैं झुकेगा नहीं साला, मैं रुकेगा नहीं साला, और जिस चाहे कोई भी मेरे सामने हो मैं अब यहाँ से प्रहार करने वाला हूँ. और 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 33 रन. देखा जाए तो यहाँ पर विकेटें जा चुकी है 2 और ज़रूर ऐसी पारी की ज़रूरत है. अब नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी इंदुलकर है. पिछले मैच में आपने देखा होगा प्रज्ञेश हल्दरकर, माफ़ कीजिएगा ज्ञानेश हल्दनकर थे, उनके साथ में गुरुप्रसाद मुद्रे थे. उसके बाद बहुत ही अच्छी पारी सजाई थी, वैसी पारी यहाँ पर सजाने का प्रयास कर रहे हैं प्रणय मुरकर. देख रहा होगा शुभम की इस ओवर की अगली गेंद है. क्या इस बार भी लंबे स्ट्रोक के लिए जाना चाहेंगे? और पे गेंद थी और बहुत ही अच्छा खेला है. लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. पहले छक्का फिर चौका, अच्छी पारी सजाते हुए. राजा सर क्या कहेंगे जिस तरीके से पारी को आगे लेकर जा रहे हैं? स्वागत तो बनताय आणि इथे स्वागत मात्र दर्जेदार केलंय शुभम मुरकरचं. अप्रतिम फलंदाजी, लाजवाब फटकेबाजी आणि आतापर्यंत संयमाने खेळणारा हाच फलंदाज इथे आक्रमक झालाय. 1 षटकार 1 चौकार याच्या बॅटमधनं तळपलाय शुभम. पुढचा चेंडू घेऊ प्रणयसाठी. फटका दर्जेदार आहे, अप्रतिम आहे. चेंडू जातोय आर पार, फरार, षटकार. दर्जेदार फटका इथे निवडला गेला. स्वागत केलं पुन्हा एकदा तिसऱ्या चेंडूचं. दमखम दाखवताना प्रणय मुरकर इथे आपल्याला पाहायला मिळालं ऑन फायर. फटकेबाजी दर्जेदार आहे, अप्रतिम आहे आणि संघाला ज्या पद्धतीची आवश्यकता आहे त्याच पद्धतीची फलंदाजी प्रणय मुरकर इथे करताना आतापर्यंत 3 चेंडू शुभमच्या माध्यमातून इथे फेकले गेलेत आणि या 3 चेंडूंचा पुरेपूर घेतला गेलाय समाचार. 16 धावा या 3 चेंडूमध्ये बनवल्या गेल्यात आणि याला प्रत्युत्तर देतोय तो प्रणय मुरकर. अभि मुरकर आणि प्रणय मुरकर हे 2 सख्खे बंधू आहेत, परंतु या क्रीडांगणावरती एकमेकांच्या विरुद्ध इथे खेळत आहेत आणि एकमेकांसमोर तगडं आव्हान उभं करताना दिसत आहेत. देखिए इस समय ज़रूरत है टीम को रनों की और वैसी पारी सजा रहे हैं प्रणय मुरकर. और यहाँ से 60+ रन बनाने हैं तो ऐसे आपको लंबे स्ट्रोक तो जड़े नहीं होंगे. और स्पेशली देखा जाए तो स्लॉग ओवर में अब पहली 3 ओवर में 3 गेंदों पर 16 बने तो इसका मतलब ये लंबा ओवर साबित होने की आशंका है. पुन्हा एकदा इथे सज्ज होईल प्रणय, समोर येईल शुभम. प्रणय आणि शुभम यांच्यामधले हे द्वंद्व इथे कुठेतरी पहिल्या 3 चेंडूमध्ये
जिंकलं गेलंय ते प्रणय मुरकरच्या माध्यमातून. शुभम पुढचा चेंडू घेऊन फील्ड इथे सजवली गेले आणि यावेळी पाहूया कोणत्या दिशेने हा चेंडू इथे फेकला जाईल. ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवलेला चेंडू भिरकावून देण्याचा इथे होता प्रयत्न. मिडल ऑफ द बॅट होऊ शकला नाही. डॉट बॉल इथे जातोय. कमबॅक करताना इथे दिसेल का, परंतु यावेळी मात्र इथे डॉट बॉल फेकण्यात यशस्वी ठरलंय. तर शुभम धावसंख्या इथे आपण पाहतोय षटक क्रमांक 5 व प्रगतीपथावरती असताना 43 लॉस ऑफ 2 विकेट. पुढचा चेंडू शुभम मुरकर टू प्रणय. पुन्हा एकदा इथे फटका चुकतोय. ऑफस्टिक बाहेर ठेवलेला चेंडू शफल होऊन मिड विकेटला भिरकावण्याचा प्रयत्न. बॅट बॉलचा कोणताही संपर्क नाही. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट जातोय. कमबॅक करतोय शुभम मुरकर. जरूर उन्होंने कहा पहले 3 गेंदें अगर आप यहाँ पर जो राज करेंगे तो आने वाले 3 गेंदों पर राज मेरा रहेगा. बैक टू बैक 2 गेंदें यहाँ पर डॉट निकाली है. इस समय देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा. पहले 3 गेंदों पर काफ़ी ज़्यादा रन बनने के बावजूद आने वाले 3 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया है. लेकिन कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या बनी है 44 रन. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये विकेट टू विकेट गोलंदाजी करण्याची सर्वात मोठी चूक शुभम मुरकरकडनं पाहायला मिळाली. याचा ॲडव्हान्टेज घेतला प्रणयने आणि सीमापार दवडले. आणि त्यानंतर अमित पवार थोडीशी चर्चा करताना त्याच्यासोबत दिसला. त्याला थोडंसं सांगितलं गेलं की प्रणय ज्यावेळी फलंदाजीसाठी येईल त्यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर वाईड लाईनच्या थोडा आतमध्ये चेंडू ठेव, तुझे बॉल सेफ जातील. त्याचं त्यानं पालन केलं आणि त्याचा रिझल्ट त्याला पाहायला मिळाला. पहिल्या 3 चेंडूवरती 16 धावा कुठल्या गेल्या, परंतु पुढच्या 3 चेंडूवरती केवळ 1 धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेली. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना तुळजा स्पोर्ट्स संघाची 2 गडी बाद 44. यही तो खासियत होती है एक अच्छे कप्तान की, जो भली बातें प्लस और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी टीम का बहुत ज़्यादा लाभ होता है. और खुद ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है. और आने वाले इस ओवर में देखना होगा, बस स्ट्राइकिंग एंड पर ज़रूर आना चाहेंगे अभी इंदुलकर, क्योंकि वहाँ से राइट हैंड बल्लेबाज को एडवांटेज है रन बनाने के लिए. तो लेकिन फिर भी जो भी मौका मिलेगा उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे प्रणय मुरकर. इस समय 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 44 रन बने इस ओवर में. कम से कम 18-20 रन बनने चाहिए तो एक अच्छा यहाँ पर जो है टारगेट हो सकता है. ओमकार आए हैं, अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. प्रणय मुरकर चाहे कोई भी एंड से वो बल्लेबाजी करे, अपनी नेचुरल बल्लेबाजी ज़रूर वो करना चाहेंगे. ओमकार इस समय 6ठी ओवर की पहली गेंद लेकर. ओमकार खानविलकर 26 जानेवारीच्या सामन्यांमध्ये अतिशय दमदार गोलंदाजी याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. पहिला चेंडू गती परिवर्तन अक्रॉस द लाईन खेळलेला फटका. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी येतोय. इथे शुभम आणि प्रणय आपल्या भावाचाच झेल इथे पकडताना पाहायला मिळाला. दुसरा बंधू तो म्हणजे शुभम. फटका इथे निश्चितच वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट इथे झाला नाही. उंची आपल्याला खूपच पाहायला मिळाली, परंतु जी दूरी जी लांबी आवश्यक होती ती मात्र इथे मिळाली नाही. एक सुंदर झेल शुभम मुरकरच्या माध्यमातून इथे बिघडतोय खेळ पुन्हा एकदा तुळजा स्पोर्ट्स संघाचा. प्रणय मुरकर बॅक टू पेवेलियन. ज़रूर अमित ने कहा था कि हम शुभम मुरकर को रोकने का जिम्मा देते हैं प्रणय मुरकर को. वही किया उन्होंने. कैच उन्होंने लपका और प्रणय मुरकर डगआउट की ओर रवाना हुए. एक अच्छा कैच है और एक शानदार खिलाड़ी है. पिछले मैच में 35 रन जोड़े थे और इस मैच में 20 गेंदों पर 33 रन. काफ़ी शानदार पारी रही प्रणय मुरकर के. बैक टू बैक 2 अच्छी पारियाँ रही, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों को भी इस पारी को अच्छा करना होगा, यानी कि और 10-15 रन बनाने होंगे इस ओवर में. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला तेच पाहायला मिळते की काय, कारण जे पहिल्या सेमीफायनलमध्ये पाहायला मिळालं शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये फक्त 1 ते 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या होत्या. आणि परंतु याही वेळी शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती आहे. पहिल्या चेंडूवरती 1 मोहरा इथे गारज झालाय. येणारे चेंडू आहेत 5. आणखीन किती धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील हे इथे आपल्याला पाहायचं आहे. ओमकार खानविलकर पुढचा चेंडू घेऊन अनिकेत कांबळे स्ट्राईकला. ज़रूर अनिकेत के पास भी ताकत है लंबे स्ट्रोक लगाने की, लेकिन ओमकार देखना होगा. अब इस समय राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. 6ठी ओवर की दूसरी गेंद. बड़ा विकेट मिला है उनको पहली गेंद पर. पटकी हुई गेंद थी, जी हाँ, हवाई फायर किया है अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ. ये बहुत ही लंबा छक्का. और इस छक्के के साथ तुलजा स्पोर्ट्स ने 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है. क्या कहेंगे पहली गेंद को फेस करते हुए इस समय इतने जबरदस्त मिडल किया है. आणि इथे आवश्यकताच होती. डू और डाय, करा किंवा मरा अशा सिच्युएशन मध्ये आपला संघ आहे. त्यामुळे इथे आपल्याला पाहायचं नाहीये न सूरत देखनी है न मुरत देखनी है. अपने को खाली अपने टीम की जरूरत देखनी है. आणि तोच इथे प्रयत्न करताना इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अनिकेत कांबळे. यानं इथे सूरत बघितली नाही न मुरत बघितली. आपल्या टीमची जरूरत बघितली आणि त्याच्या बॅटमध्ये इथे षटकार पाहायला मिळाला.
जरूर एक प्रतिभावान खिलाड़ी है और मैंने कहा कि इनके पास क्षमता है, वही क्षमता यहाँ पर दिखाते हुए न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और इस समय अनिकेत बड़ा बनकर अपने टीम की पारी को लेकर जाते हुए हवा में उछाला है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इस समय छक्का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर ये छक्का लगता हुआ। अमित वहां पर थे, कुछ समय ऐसा लग रहा था कि कैच तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बार भी एडवांटेज हवा का मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है अब तक 56 को सुरक्षित रखा है। और यहां पर देखा जाए तो एक रन जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी 57 रन, 57 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। छठे ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष है। राजा सर क्या कहेंगे, एक कम से कम एक छक्का देखने की जरूरत रहेगी। आवश्यकता आहे 60+ तरी जाण्याची आवश्यकता असेल इथे, तर कुठेतरी सन्मानजनक आणि चान्सेस उपलब्ध करणारी धावसंख्या इथे ठरू शकते. ओमकार खानविलकर फलंदाजी मार्कवरती, नवीन फलंदाज इथे दाखल होतोय. अभिषेक नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळेल. अनिकेत कांबळेने मात्र आपलं दमखम दाखवलंय. हर्षलला मागे ठेवून याला मैदानाच्या आतमध्ये आणण्याची जी रणनीती आखली गेली ती सक्सेसफुल इथे पाहायला मिळाली. ओमकार पुढचा चेंडू घेऊन अनिकेतसाठी, यावी आडव्या बॅटने खेळलेला फटका, डीप मिड विकेटला चेंडू इथे ट्रॅव्हल होतो. एक धाव इथे घेतली गेले, मिसफिल्ड इथे पाहायला मिळाली. ॲडव्हान्टेज इथे मिळाला, दुसरी रन सहजरित्या इथे घेतली गेले. अच्छा खेलोगे तो टालिया मिलेगी और खराब खेलोगे तो गालिया मिलेगी. आणि मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटकार ठोकल्यानंतर दर्शकांच्या टाळ्याही पाहायला मिळत आहेत आणि खराब कामगिरी झाल्यानंतर डगआउटमध्ये गालियाही आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत. ओमकार पुढचा चेंडू घेऊन, यावेळी टाकलेला चेंडू स्क्वेअर लेगला जातोय. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. तत्वर एक धाव इथे घेतली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रन आउट. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा इथे प्रयत्न होता, परंतु या प्रयत्नाला मात्र यश इथे आलेलं पाहायला मिळालं नाही. अनिकेत कांबळे इथे निराश होऊन पॅव्हलियनच्या दिशेने परतेल, परंतु त्याच्यावरती त्याला दिली गेलेली संधी आणि त्या संधीचं केलेलं सोनं इथे आपल्याला पाहायला मिळालंय. त्याला जेवढे चेंडू खेळायला मिळाले त्याने दमदार कामगिरी ते करून दाखवले. बहारदार खेळ अनिकेत कांबळेचा इथे बहरला. 6 षटकांचा खेळ इथे झालाय समाप्त. फर्स्ट इनिंग इथे होते संपन्न आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 60 धावा. 61 धावांचं लक्ष, 36 चेंडू 61 धावा, असं समीकरण असेल साई आदर्श संघासमोर. काय घडेल काय बिघडेल, येणाऱ्या 6 षटकांमध्ये कोणता संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल तेही ते आपल्याला पाहायचं आहे. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा PPL 2023.
लेंथ वरती घेण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. ऍडव्हान्टेज मिळाला. अक्रॉस द लाईन खेळलेला फटका इथे ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेअर एकच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बॉल्स चौकार. धावसंख्या आपण पाहतोय 1 गडी बाद 10 धावा. 61 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेली जोडी आणि या जोडीकडनं केले गेलेला सुरुवात इथे आपण पाहतोय. समीर पुढचा चेंडू घेऊन 31 चेंडू आणि 51 धावांची आवश्यकता संघाला आहे अजूनही. अभि इथे क्षेत्ररक्षण सजवतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. प्रणयला सर्कलच्या आतमध्ये घेतले गेले. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑन याच्यामध्ये घेतला गेले ते प्रणय याला. डीप मिड विकेटला ही एक क्षेत्ररक्षक इथे घेतला जातोय. इन स्विंग करण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टिकच्या खूप बाहेर ठेवलेला चेंडू. सचिनने मात्र इथे सन्मान दिला. हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली. तद्वर घेतली गेली 1 धाव. हर्षलच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं. षटक क्रमांक पहिलं इथे झालंय समाप्त. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 1 गडी बाद 11. येणारे चेंडू आहेत ते 30 आणि धावा बनवायचे आहेत इथे 50. 30 चेंडू 50 धावा असं समीकरण साई आदर्श पावस संघाच्या या जोडीसमोर. जरूर मंच पर मौजूद तमाम हस्तियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका कीमती समय आपने निकाल कर इस पावस प्रीमियर लीग में यहाँ कर जो रौनक बढ़ा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो ज़रूर आप जैसे हस्तियाँ हैं इसीलिए हम जैसे कमेंटेटर का नाम रत्नागिरी में है और ऐसी प्रतियोगिता देखने का हमें जो है बहुत ही ज़्यादा अनुभव प्राप्त होता है. तो बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हूँ. ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए. इंशाल्लाह हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. तो चलते बीच मैदान में दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है. इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या संघर्ष करना पड़ेगा साई आदर्श पावर्स टीम को या तुलजा स्पोर्ट्स की टीम इस रनों को डिफेंड कर पाती है ये आने वाला समय तय करेगा. लेकिन हर एक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है. हर एक मोमेंट पर आपको अच्छा खेल कर दिखाना होगा. अनिकेत पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी और इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए सज्ज है सचिन. तो अनिकेत 8-10 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए. दूसरी ओर की पहली गेंद थी हवाई सफर पर भेजा है. गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. क्या बात है. टाइगर अभी जिंदा है. मैं जरूर वो गाना सुना होगा. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. लेकिन यहां पर सचिन बताते हुए छक्के से करेंगे हर गेंदबाज का स्वागत. क्या कमाल की बल्लेबाजी. रुपेश जी नार्वेकर सर इनकी ओर से इनाम आता हुआ. अगर सचिन 3 छक्के जड़ते हैं तो 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी. इस संडे को सुपर संडे बनाने का सुनहरा अवसर है सचिन के पास. बहुत ही बड़ा नाम है. इतना काम भी करना होगा. 1 छक्का जड़ चुके हैं और 2 छक्के जड़ने होंगे. मौका बनेगा मेरे दोस्त. देखिए इस धनराशि से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये मैच. तो अनिकेत इस ओवर की अगली गेंद लेकर सचिन के लिए. देखिए जैसे ही इनामों की धनराशि लगती है तब बल्लेबाज नए स्टाइल में ज़रूर खेलता है. इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड करेंगे. वहाँ पर 1 रन ज़रूर जो है पूरा करते हुए रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन के साथ. कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 रन. मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको 1-1 रन भी लेना होगा क्योंकि बूंद बूंद से समंदर बनता है और 1-1 रन से भी इस टारगेट को चेस किया जा सकता है. जिस तरीके से ज्ञानेश शर्धनकर ने कमाल की पारी सजाई थी वेदा स्पोर्ट्स की ओर से, वैसी पारी यहाँ पर जो है ये दोनों बल्लेबाज सजाने की कोशिश करेंगे. इस बार भी काफ़ी ज़ोर से खेलना चाहते थे. टेढ़े बल्ले से खेलने का टच एंड गो का मोमेंट बन सकता था लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को और इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. मैं हमेशा कहता हूं क्यों अपने हाथों में नसीब को लेकर मुकद्दर को ढूंढता है. अरे क्यों अपने हाथों में नसीब को लेकर मुकद्दर को ढूंढता है. सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों को ढूंढता है. आपको टकराना होगा हर एक गेंदबाज के अगेंस्ट. आपको टकराना होगा हर एक सिचुएशन के अगेंस्ट. आपको टकराना होगा जो भी आपकी टीम के हित में होगा उसके अगेंस्ट. और वही कोशिश यहाँ पर जा रही है दोनों भी बल्लेबाजों की. सचिन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे.
अनिकेत की गेंद का मुकाबला करने के लिए। इस समय परफेक्ट यहाँ पर ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर ब्लॉक कॉल में गेंद की थी, विकेट कीपर वहां पर थे अभी इंदुलकर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए मैच में अगर तुलजा स्पोर्ट्स को आना है तो विकेट नहीं, यहाँ पर गेंद को डॉट निकालना होगा और यही डॉट गेंदे आपको मैच में बनाए रखेगी राजा सर। आणि सलग डॉट चेंडू गेल्यानंतर मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण फलंदाज गारद झालेली ही पाहिलेत. इथे फटका दर्जेदार आहे, मोठा आहे, चेंडू जातोय वन्स अगेन हवाई यात्रेसाठी सीमा पार षटकार. सचिनच्या बॅटमधनं इथे निघालाय दुसरा षटकार आणि यानंतर आणखीन एक षटकार जर याच्या बॅटमधनं निघाला तर या 500 रुपयांचा हा विजेता ठरू शकतो. सुपर संडे सुपर डुपर संडे होण्याच्यासाठी फक्त एका षटकाराची आवश्यकता आहे, ती सचिन याला. परंतु अनिकेत वरती केला गेलेला हा हल्ला इथे मात्र उद्ध्वस्त करतोय त्याच्या मनोधैर्याला, इथे आता उद्ध्वस्त करतोय त्याच्या आत्मविश्वासाला. परंतु याला इथे मात्र संयम राखावा लागेल आणि आपला दमखम दाखवावा लागेल. एका षटकाराने हा सामना गमावला तर जाऊ शकत नाही, परंतु एक मोहरा जर इथे गारद केला गेला तर आपला संघ मात्र या सामन्यामध्ये परत येऊ शकतो. हे नेहमी त्या लक्षात ठेवून पुढचा चेंडू घेऊन इथे दाखल होतोय अनिकेत कांबळे. जरूर बहुत ही बेहतरीन पारी सजाते बचने की कोशिश चल रहे हैं। ऑफ साइड दे ऑफ स्टंप पर गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर रहा। और जरूर एक बात तो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले समय में सम्माननीय भैया शेठ सामंत जी इनका एमसीसी के वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर नियुक्ति हुई है, तो रत्नागिरी का क्रिकेट एक अलग लेवल पर आपको देखता हुआ ज़रूर प्राप्त होगा। और हमेशा देखा जाए तो रत्नागिरी के क्रिकेटर ने अच्छा प्रदर्शन किया और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में एक बड़े पायदान के ऊपर रत्नागिरी के स्टार कास्ट खेलते हुए नजर आएगी। आणखीन एक गोष्ट म्हणजे हे दोन्ही सामंत बंधू एका बाजूला महाराष्ट्र क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष आहेत ते सन्माननीय भैया शेठ सामंत, टेनिस क्रिकेटचे असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत ते आपले सन्माननीय उद्योगमंत्री उदयजी सामंत साहेब. त्यामुळे क्रिकेटचे सुनहरे दिवस यानंतर रत्नागिरी तालुका आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी निश्चितच असणार आहे. क्रीडांगणाचं यानंतर होणारं काम आणि त्यानंतर आयोजित केले जाणारे रणजीतचे सामने आपल्याला लवकरात लवकर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या क्रीडांगणामध्ये पाहायला मिळतील आणि त्याची सुरुवात ही आतापासून केली गेली अशी माहिती आतापर्यंत आपल्यापर्यंत पोहोचते. जरूर इसीलिए देखिए ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बड़े बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले, जिसमें विवर जो कि पिछले साल 68,000 था उसका रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा। और उसके बाद इस साल 1,28,590 दर्शकों ने यूट्यूब पर लाइव देखते हुए रत्नागिरी का नाम वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर लाकर खड़ा किया। इसका पूरा श्रेय जाता है सम्माननीय उदय जी सामंत साहब, भैया शेठ सामंत साहब और नेताजी मुरकर साहब भी रहेंगे और साथ ही साथ बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। इन सभियों ने मेहनत की है, उसका पूरा जो है कार्य उन्होंने किया, जिसकी वजह से रत्नागिरी का नाम अब सबसे टॉप पर है। और प्राउड फील होता है जब हम रत्नागिरी के रहने वाले हैं और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं हमारे नाम से पहले जब रत्नागिरी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है तब इन हस्तियों की हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, इसीलिए आज हम इतने मंच के ऊपर कॉमेंट्री कर पा रहे हैं। आणि त्याचबरोबर कौतुक असेल ते ओम साई स्पोर्टच्या सर्व स्टाफचं, कारण पाया जेव्हा रचला गेला, पहिलं पर्व जेव्हा साजरं केलं गेलं ना तेव्हा अपार कष्ट त्यांना सहन करावे लागले, स्वीकारावे लागले, चॅलेंज अनेक आव्हानांना त्याला समोर जावं लागलं आणि त्यानंतर हा रचला गेलेला पाया आणि त्यावरती रचला गेलेला हा कळस आपल्याला 9व्या पर्वामध्ये चॅम्पियन ट्रॉफीच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. धावसंख्येत आपण पाहतोय 26, एक गडी बाद 26 धावा, 24 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता. बॉलिंग मार्गवरती समीर सुरवे की जब भी बात आती है तो ज़रूर एक ज़बरदस्त गेंदबाजी के रूप में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। पॉइंट की दिशा में खेला है, खतरा हो सकता था जब तक कि थ्रो करते यहाँ पर जो है 1 रन मुकम्मल कर लिया। और जैसे समीर सुरवे मेरी नज़रों के सामने आते तो दत्तकृपा रनपार ये टीम मेरे आंखों के सामने आती है। और दत्तकृपा रनपार टीम जब आंखों के सामने आती है तो ज़रूर वैभव जी पावस्कर सर, इनका नाम मैं हमेशा लेता हूँ, जिन्होंने पिछले साल में एक ज़बरदस्त कारनामा किया था। आप खुद कप्तान बनते हुए दत्तकृपा रनपार को फाइनल में लेकर गए श्री समर्थ ट्रॉफी के अंदर। और वही वैभव जी पावस्कर सर, इनका आगमन थोड़ी देर में इस मंच के ऊपर होगा। आणि वैभवजी पावस्कर यांचं शुभ आगमन झालंय. पहिल्याच बक्षीस इथं जाहीर होते. सीमारेषेच्या बाहेर जे दर्शक आहेत आणि त्या दर्शकांपैकी जर कोणी कॅच घेतली, कॅच पकडली तर वैभव पावस्कर यांच्याकडून 100 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. म्हणजे दर्शकांनाही इथे सुपर संडे सेलिब्रेट करण्याची संधी इथे उपलब्ध होऊ शकते. फक्त एक झेल मिळवा 100 रुपयांचे रोख पारितोषिक. ज़रूर आप में ताकत है तो ज़रूर हौसलों को ज़िंदा रखना होगा।
और वही हौसले लेकर यहाँ पर दोनों भी टीमें खेलते हुए इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास, टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास। मैं हमेशा कहता हूँ जब उंगली सीधी उंगली से घी निकल रही तो टेढ़ी क्यों, और ये टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास कहीं ना कहीं असफल होता हुआ। नक्कीच समीर सुर्वे, या ठिकाणी जर तुम्ही 2 विकेट घेतलात तर वैभवजी पावसकर यांच्याकडून तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लागतंय. जरूर समीर जरूर सुर्वे. जरूर जरूर इनामों की धनराशि बढ़ेगी क्योंकि वैभव जी पावसकर सर मंच के ऊपर मौजूद है। इस समय हल्के हाथों से खेला है और 1 रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। मैं हमेशा कहता हूँ पावसकर सर, ख्वाब भले ही टूटते रहे पर हौसले फिर भी जिंदा हो। काम अपना ऐसा करो जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। यहाँ पर आपको अच्छी गेंदबाजी में अच्छा कारनामा करना होगा, अच्छी बल्लेबाजी में अच्छा कारनामा करना होगा। आप अच्छा खेल करो, दर्शकों की ओर से जरूर तालियों की गूंज आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी। समीर पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी टाकलेला चेंडू वाईड लाईन यॉर्क होतास, अतिशय सुरेख फटका इथे खेळला गेलाय. कव्हर पॉइंटला भेदून चेंडू सीमारेषेच्या दरम्यान इथे डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. त्याच्यावर घेतली गेले 1 धाव. एका धावेने इथे आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळेल ती 1 गडी बाद 31. अजूनही 30 धावांची आवश्यकता. येणारे चेंडू आहेत 20 आणि इथे धावा बनवायचे आहेत 30. 20 चेंडू 30 धावा असं समीकरण असताना समीर सुर्वे बॉलिंग मार्गवरती राइट आर्म राउंड द विकेट. जरूर शुभम मुरकर अभी भी डगआउट में सेफ है, इसका मतलब साफ है यहाँ पर कहीं ना कहीं साई आदर्श पावस के बल्लेबाज थोड़ा सा रन गति बढ़ाने का प्रयास जरूर करना चाहते हैं। दूसरी ओर तुलजा स्पोर्ट्स की ओर से हर गेंदबाज को डॉट गेंद निकालने का यहाँ पर जो है प्रयास रहेगा। जब डॉट गेंदें आएगी प्रेशर ऑटोमेटिकली बल्लेबाज के कंधों पर जाएगा और वही कोशिश यहाँ पर जो है समीर सुर्वे अपनी गेंदबाजी में करते हुए। आणि जसजसा प्रेशर वाढत जाईल तसतशा फलंदाजांच्या माध्यमातून ही चुका होताना इथे पाहायला मिळतील. याचाच फायदा इथे आपल्याला घ्यायचा आहे आणि तोच प्रयत्न इथे गोलंदाजाला करायचा आहे. समीर सुर्वे पुढचा चेंडू बॉलिंग मार्ग बॅटिंग मार्गवरती आपण पाहतोय तो यावेळी सचिनच्या बॅटमध्ये 2 षटकार इथे पाहायला मिळत. संयमी खेळ, सेन्सिबल क्रिकेट अलॉंग द कार्पेट. मिड विकेटला खेळलेला फटका 1 धाव देऊन जातोय. षटक क्रमांक 4, 3 इथे झाले समाप्त. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 33. 1 गडी बाद 33. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 61 धावांचा पाठलाग करताना साई आदर्श पावस संघाची. नक्कीच सचिन शिंदे यांना सुद्धा पारितोषिक लागतंय. सचिन शिंदे तर यांनी हा सामना जर नॉट आउट आणि विजयी करून दिला तर पप्पू सामंत यांच्याकडून 1000 रुपयाचं रोख रक्कम या ठिकाणी त्यांना मिळणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. सचिन शिंदे. जरूर सचिन शिंदे के लिए आज का दिन बहुत ही अहम रहेगा। आज की डेट वो नोट करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। उनको पता है कि आज उनको 1500 रुपए की धनराशि जीतने का मौका, और डबल धमाका इसीलिए कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ अपनी टीम जो है फाइनल में दस्तक दे सकती है। और बीच मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ तनुज जी मुड़े सर, इन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक का इंतजाम किया, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा एक्सिबिशन मैच रेस्ट ऑफ पावस और बेस्ट ऑफ पीपीएल के दरमियान। और जरूर उस मैच के लिए महाकाली मावड़ंगे इनकी ओर से 10x की वॉल स्पॉन्सर की गई है, उनके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हॅलो, नक्कीच जर विचार करायला गेला तर तुळजापूर संघाचं पहिलं षटक होतं, 11 धावा खर्च केल्या होत्या, 1 गडी त्याने गारद केलं होतं. दुसरं षटक अनिकेतने हाताळलं, थोडंसं महागडे षटक नक्कीच म्हणू शकतो. त्या धावा 15 त्यानं खर्च केलेला पाहायला भेटेल. तिसरं षटक कमबॅक करताना समीर सुर्वेला पाहायला भेटेल, फक्त 7 धावा खर्च केल्या गेल्या आहेत. नक्कीच कुठेतरी धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरवर पाहायला भेटेल 33 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 1 गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या आहे 33. जरूर मैच एक क्रूशल मोमेंट पर आकर रुका है। सभी हस्तियां भी इस मुकाबले का मजा ले रहे, और हम उम्मीद करते हैं ये मैच शायद ही आखिरी गेंद पर जाने की आशंका है। खुद गेंदबाज इस समय आते हुए अनिकेत को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी मैच में वापस आने के लिए। और तुलजा स्पोर्ट्स यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से कमबैक करती है। स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय बल्लेबाज रहेंगे सचिन, स्ट्राइकिंग एंड पर है। इस समय देखना होगा अराउंड विकेट अनिकेत गेंदबाजी मार्ग पर। रन संख्या बनी है अभी भी 33 रन। पटकी हुई गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा, व्हाट अ शॉट।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डांस इंडिया डांस में मिथुन चक्रवर्ती सर क्या बात है का नारा लगाते हैं। मैं भी इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि जैसी ही बोली बड़ी है, यहां पर सचिन के बल्ले से छक्का निकला है। क्या बात है, जबरदस्त 3 छक्के लगे हैं और उनके अकाउंट में जीपे के जरिए से 500 से और 3 मारेंगे तो और 500 मिलेंगे। क्या बात है, जबरदस्त पारी सजाते हुए सचिन ऑन फायर। अनिकेत इस ओवर की अगली गेंद कर गए। सचिन का सीना अब और थोड़ा सा चौड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच भी काफी जोर से खेलना चाहते थे, विकेटों के पीछे अभी इंदुलकर ने कैच को लपकाए। एक अच्छी पारी सचिन की यहां पर समाप्त होती हुई और जरूर इस विकेट के बलबूते पर रन संख्या अब तक जुड़ी हुई है 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सचिन ने किफायती बल्लेबाजी की जिसमें 3 छक्के उन्होंने लगाए और देखा जाए तो मेरे दोस्तों उन्होंने अपनी पारी में रन जोड़े हैं 12 गेंदे 27 रनों की शानदार पारी यहां पर समाप्त होती हुई, असरदार पारी समाप्त होती हुई और दमदार पारी समाप्त होती हुई। अमित आएंगे बीच मैदान में अपनी कंधों पर जिम्मेदारी लेकर। मी वेळोवेळी निश्चितच सांगतो मित्रांनो, बायको गेली माहेरी काम करी पितांबरी, सचिन आला बाहेरी अमितवर आली जबाबदारी। ही जबाबदारी आता कर्णधाराला पूर्ण करावी लागेल आणि त्याला माहिती आहे ही जबाबदारी जर का चोखरीत्या पूर्ण केली तर अंतिम फेरीचे दरवाजे उघडणार आहेत आणि हे दरवाजाचं जे टाळं आहे त्याची चावी जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर उर्वरित ज्या धावा आहेत त्या तुम्हाला पूर्ण कराव्याच लागतील आणि हा एकमात्र ऑप्शन तुमच्याकडे असेल। एका बाजूला तुळजा स्पोर्ट्सचा संघ झगडताना दिसतो, प्रत्येक धाव रोखण्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी पाहायला गेलं तर मित्रांनो धाव संख्या झाली ती म्हणजे 39 धावा। 39 रन बने हैं, जीतने के लिए चाहिए इस समय 18 गेंदे 16 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। 16 चेंडू आणि 22 धावा हे समीकरण आहे। कोणता संघ अंतिम फेरीमध्ये विराजमान होणार, साई आदर्श पावस की तुळजा स्पोर्ट्स। अनिकेत ने एक ब्रेक थ्रू दिला है अपने टीम के लिए, इस समय जरूरत है और एक ब्रेक थ्रू दिला पाते हैं नहीं अमित है। सिक्सर किंग के नाम से इनको जाना जाता है और बहुत ज्यादा 6 उन्होंने लगाए हर प्रतियोगिता में। पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से यहाँ पर खेला है, डीप मिड विकेट से ये फील्डर आते हुए 1 रन यहाँ पर जो है दौड़कर पूरा कर लिया। अमित का खाता खुलता हुआ, रन संख्या बनी 40 रन, 21 रन और बनाने होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों के मन में सवाल आते हुए कि यहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। राजा सर क्या कहेंगे, अगर अनिकेत आने वाली गेंदें अगर सेफ निकालते तो मौका क्या तुळजा स्पोर्ट्स के लिए बनेगा? प्रयत्न करावे लागतील। इथे जर एखादं षटक इथे जर सेफली गेलं तर मात्र इथे पुन्हा एकदा कमबॅक होऊ शकतो तुळजा स्पोर्ट्स संघाचा। शेवटपर्यंत शेवटच्या षटकापर्यंत आपल्याला मात्र आपल्यावरचा विश्वास इथे कमी करून चालणार नाही। प्रयत्न शेवटच्या षटकापर्यंत इथे करायचे। अमितच्या बॅटमधनं जर 2 षटकार इथे निघाले तर तनुज मुळे यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज इथे जाहीर होतंय। स्वेर मारा खूपच बाहेर, ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू, व्हाईट बॉलचा इथे इशारा येतोय। दिशा कुठेतरी भरकटले परंतु संघाची दुर्दशा करून जाणारी गोलंदाजी इथे ठरते की काय, हा पडलेला मोठा प्रश्न तुळजा स्पोर्ट्स संघासमोर। या BPLच्या 9व्या पर्वामध्ये दर्जेदार गोलंदाजी अनिकेत कांबळेकडनं पाहायला मिळाली परंतु महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये खराब कामगिरी इथे आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्याला कारण असेल ते आक्रमक फलंदाज। यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलेला फटका आहे, चेंडू अलॉंग द कार्पेट डीप स्क्वेअर लेगला इथे ट्रॅव्हल झालाय। क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, एकदा बी ते घेतले गेले, स्ट्राईकला येईल तो अमित आणि अमितच्या बॅटमधनं जर 2 षटकार इथे निघाले तर मात्र 500 रुपयांचं कॅश प्राइज जाहीर केलं गेलंय तनुज मुळे यांच्याकडून। जेव्हा जेव्हा प्राइज अनाउन्स केले गेले तेव्हा तेव्हा फटकेबाजी मैदानामध्ये अमित याने वेळोवेळी केलेली आहे। ते चित्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार का? अनिकेत याचा पुढील चेंडू, यावेळेला दमदार षटकार, अब की बार अमित का वार, बंदूक की गोली और सरदार की बोली फिर से एक बार सही साबित होती हुई। क्या शॉट है, मैंने कहा है राजा सर जब जब बोलियां लगाई गई है वो रुकते नहीं, मानो कि ऐसा एक अलग सी एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। और जिस तरीके से रिकी पॉन्टिंग ने 2003 में इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से रन बनाए थे वैसी एनर्जी यहाँ पर जो वो बनाने में कामयाब होते। छक्का जड़ा है, अप्रतिम फटका, लाजवाब टायमिंग, मिडल ऑफ द बॅट स्वीट साऊंड आणि त्यानंतर आलेला एक मोठा धमाका अमित पवारच्या बॅटमधनं षटकार। 13 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता आहे। अनिकेत कांबळे पुढचा चेंडू घेऊन अमित पवारसाठी एका षटकाराची आवश्यकता इथे असेल 500 रुपये आपल्या खात्यावरती नोंदवण्यासाठी।
इथे टाकलाय लो फुल टॉस अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑनला चेंडू इथे ट्रॅपल होतोय. क्षेत्ररक्षक प्रणय मुरकर चेंडूवरती येतोय. एक धाव इथे घेतली गेले. स्ट्राईक ते स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न अमित पवारच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 4 इथे होतंय समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येत आपण पाहतोय 2 गडी बाद 49. 12 चेंडू 12 धावा असं समीकरण आहे. असाच एक सामना यावेळी आपण पाहिला होता बाबर शेख ट्रॉफीमध्ये. 12 चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता होती आणि गोलंदाजी करणारा संघ तिथे विजेता ठरला होता. तसाच चमत्कार इथेही घडू शकतो, परंतु त्या पद्धतीची त्या दर्जाची गोलंदाजी करणार कोण या प्रश्नाचं उत्तर मात्र या षटकामध्ये आपल्याला इथे मिळेल. इथे जर एखादं षटक अप्रतिम गेलं 2 ते 3 धावांचं जर गेलं आणि एखाद दुसरा मोहरा जर इथे गारद झाला तर मात्र तुळजा स्पोर्ट्स संघासमोर एक संधी उपलब्ध होऊ शकते. आणि यामुळे अभि येतोय. अभि इंदुलकर स्वतः सामना सेट करण्याच्या इराद्याने हे 5वं षटक स्वतःच्या खांद्यावरती घेऊन बॉलिंग मार्कवरती इथे सज्ज होईल. आणि समीर आहे तो अमित पवार. एक षटकार त्याच्या बॅटमधनं निघालाय. आणखीन एक षटकार जर इथे निघाला तर 500 रुपयांचा मानकरी तो निश्चितच ठरणार आहे. एका बाजूला अभि इंदुलकर तर दुसऱ्या बाजूला अमित पवार. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या ठिकाणी पॉवर्स प्रीमियर लीगचे स्पॉन्सर कुमार शौर्य विश्वास पावसकर चिराखाट मालक व व्यापारी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी सचिन भाटकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. नक्कीच सरचं स्वागत असेल. येणाऱ्या काळामध्ये 8 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी देखील आपल्याला पाहायला मिळेल मित्रांनो. इस बीच अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था और अभी इंदुलकर ने यहाँ पर पहली ही गेंद पर सफलता दिखाई है और कहीं ना कहीं कवर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छा कैच सेकंड अटेम्प्ट में इस समय कैच को लपका है. तो आने वाली गेंदें अब रहेगी मेरे दोस्तों 11 और जीतने के लिए चाहिए 12 रनों की जरूरत. 11 चेंडू आणि 12 धावा हे समीकरण आहे. शुभम मुरकर इस समय बीच मैदान में आएंगे और अमित का कैच लिया था शुभम साळुंखे ने. अच्छा कैच, खुश रहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो. अभी इंदुलकर अपनी गेंदबाजी से पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा है और जिस खिलाड़ी का नाम रत्नागिरी में बहुत ज़्यादा मशहूर है वही शुभम मुरकर बीच मैदान में मौजूद है. मैन फ्रॉम चिंचकरी श्री साई स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसिडर भी है और इस समय देखना होगा किस तरीके से रन बनाते हैं. आने वाली 11 गेंदें 12 रनों की ज़रूरत है. इनके खिलाफ यहाँ पर जो है एक ज़रूर गेम प्लॅन बनाने का प्रयास कर रहे हैं. देखिए हमेशा मैं कहता हूँ, प्रत्येक वेळेला मी सांगतो मित्रांनो, अशा प्रकारे यशस्वी व्हा की तुम्हाला हरवण्यासाठी गेम प्लॅन नाही तर षडयंत्र रचले पाहिजेत. आणि या खेळाडूच्या विरोधामध्ये षडयंत्र रचला जाईल का हे देखील पाहण्यासारखं असेल. अभी इंदुलकर इस समय गेंदबाजी के लिए राइट आर्म और विकेट से रनअप में थोड़ी सी गड़बड़ी होने की वजह से फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए और शुभम अपने नेचुरल स्टाइल में यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करना चाहेंगे या सिंगल से आगे जाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा. 5वीं ओवर की दूसरी गेंद जयदीप तोडणकर यांच्याकडून जर बाप रे बाप, बैक टू बैक दूसरा विकेट. क्या ये मुकाबले का राजा सर टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये आने वाला समय तय करेगा. रन मशीन को भेजा है डगआउट की ओर. अभी इंदुलकर यहाँ पर नया कारनामा करते हुए एक तरफा लगने वाला मैच कहीं ना कहीं तुलजा स्पोर्ट्स के खेमे में झुकेगा या नहीं. 10 गेंदे हैं अब जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत. नक्कीच अभिषेक इंदुले इथे दाखवून देतोय. येतो टेलर था पिक्चर अभी मेरे बाकी है दोस्त. मॅच अजून संपली नाहीये कारण मी अजूनपर्यंत मॅच हरलो नाही. मी शेवटपर्यंत लढेन. शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढत राहण्याचा प्रयत्न यावे अभिषेक इंदुलकरांचा असेल. नक्कीच लगातार 2 चेंडूवरती 2 विकेट इथे घेताना पाहायला भेटेल. धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरर फक्त आहे 49 धावा. नक्कीच अभिषेक इंदुलकर इथे दाखवताना पाहायला भेटेल. जर्सी क्रमांक 77 परिधान केलेला अभिषेक इंदुलकर इथे दाखवून देताना पाहायला भेटेल. जरूर अगर इस गेंद पर हैट्रिक लेते तो एक नया यहाँ पर रिकॉर्ड बनेगा इस सेमीफाइनल में, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी ली. इससे पहले उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी. कहीं ना कहीं राजा सर उन्होंने कहा कि मैं अब गेंदबाजी का जिम्मा उठाऊंगा और इस जिम्मे को उठाते हुए पहली गेंद पर अमित को चलता किया, दूसरी गेंद पर शुभम मुरकर को चलता किया. तो कहीं ना कहीं मैच में वापस आने के अब हल्के से सपने देखते हुए सपना वो नहीं या होता. ठिकाणी आयुब दरवेश याच्या प्रत्येक षटकारासाठी जयदीप तोडणकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लागत आहे. तसंच या ठिकाणी अभि इंदुलकर या ठिकाणी जर हॅट्रिक करतायत तर वैभव पावसकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर होत आहे.
अभि इंदुलकर बॉलिंग मार्कवरती अतिशय लाईन लेंथ अप्रतिम पाहायला मिळाला. तोच हा गोलंदाज ज्याने इथे झटके दिलेत. आणि मी थोड्याच वेळापूर्वी बाबर शेख चषकाचा इथे विषय क्लिक केला होता की तिथेही आपल्याला तेच समीकरण पाहायला मिळालं होतं. 12 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता असताना गोलंदाजी करणारा संघ जिंकला होता. 2022ला समर्थ ट्रॉफीमध्ये असंच घडलं होतं. 6 चेंडूंमध्ये 3 धावांची आवश्यकता असताना तो सामना डिफेंड केला गेला होता. परंतु त्यामुळेच या शारजाच्या या क्रीडांगणामध्ये तेच कीर्तिमान इथे पाहायला मिळेल का हे इथे आपल्याला पाहायचं आहे. व्हाईट लाईनच्या दरम्यान टाकलेला हा चेंडू, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस आणि त्याचबरोबर थोडासा स्विन इथे पाहायला मिळतोय. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी, अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अभि इंदुलकर. जरूर देखिए, दुनिया जब आपको कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का, और वही मौका को यहाँ पर देख लिया अभी ने, और गेंदबाजी के लिए अब तक 2 विकेट अपने नाम किए हैं. अब तक इस ओवर में एक भी रन नहीं बना, यानी कि 9 गेंदे 12 रनों की राजा सर अभी भी जरूरत है, यानी कि मैच अब स्टार्ट हुआ है. इस समय भी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की वाइड का इशारा आता हुआ. इस वाइड के साथ इस समय साई आदर्श पावर्स टीम के 50 रन पूरे होते हुए. क्या कहेंगे जिस तरीके से गेंदबाजी अभी यहाँ पर कर रहे हैं? आणि स्वतः जबाबदारी घेतल्यानंतर आपण यष्टनच्या पाठीमागे उभा राहत होता. त्यामुळे फलंदाज कोणत्या दिशेने कशा पद्धतीने खेळतोय आणि आपल्याला कुठे मारा करायचा आहे हे स्पॉट त्याने निवडलेत आणि ते स्पॉटवरतीच तो इथे टप्पा मेंटेन करताना दिसतोय. चांगली रणनीती अभि इंदुलकरच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू स्ट्राईकला इथे आपण फलंदाज पाहतोय तो यावेळी ओमकार खानविलकर. यावेळी टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा गती परिवर्तन, बॅकफूटवरती येतोय. डीप पॉइंटला इथे चेंडू ट्रॅव्हल, एक धाव इथे घेतली जाते. एकाच धावेवरती समाधान. अतिशय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं गेलंय आणि त्याच दिशेने चांगला टप्पा इथे राखताना अभि इंदुलकर पाहायला मिळतोय. स्वतः कर्णधार घेतलेली हे जबाबदारी इथे कुठेतरी पार पडताना निश्चितच तो यशस्वी ठरलाय असं आपण इथे म्हणू शकतो. नक्कीच वेळोवेळी देखील सांगितलं जातं क्रिकेट खेळत असताना गोलंदाजाचा योग्य टप्पा आणि बाहुबली पिक्चर बघत असताना कटप्पा, हे 2 प्रमुख आहेत. हे जर नसतील तर नक्कीच तुम्हाला पराभवाला सामोरं जावं लागेल. इस समय क्या हुआ है, फ्लाइंग स्लीपर गेंद आती हुई. जी हाँ, जाइए गेंद को लेकर आइए. मुकाबले का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है. जरूर सर के ऊपर उन्होंने हाथ लगाया. इस रनों को रोकना चाहिए था कि नहीं चाहिए? मैं कहूंगा चाहिए था. इसको अगर रोका जाता तो नज़ारा कुछ और होता. एक एक रन के लिए भी अब साई आदर्श पावर्स टीम को मशक्कत करनी पड़ रही है. ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर. और यहाँ पर कहीं ना कहीं तुलजा स्पोर्ट्स के हाथ से रेत की तरह शायद मुकाबला ये छूटता हुआ नजर आ रहा है. जसर क्या कहेंगे, गेंद रुकना चाहिए था कि नहीं? सहज सोपं वाटणारं हे क्षेत्ररक्षण होतं, परंतु इथे मात्र याच्या माध्यमातून चूक झाली. चेंडूपर्यंत रीच होऊ शकला नाही आणि आउटफील्ड अतिशय वेगवान, त्याचा ॲडव्हान्टेज इथे मिळाला. 4 धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 7 चेंडू आणि 6 धावा. यानंतर बॉलिंग मार्कवरती इथे मात्र अभि इंदुलकर पुढचा चेंडू घेऊन. फलंदाज इथे आपण पाहतोय स्ट्राईकला यावेळी अयूब, राईट हँड फलंदाज अयूब. हाच चौका इथे गेला नसता तर कुठेतरी चान्सेस उपलब्ध होण्याची संधी निश्चितच इथे आपल्याला पाहायला मिळाली असती. बॅकफूटवरती येऊन पॉईंटच्या दिशेने मारलेला हा फटका, क्षेत्ररक्षण इथे प्रॉपरली होऊ शकलं नाही. हर्षल ठरतोय असफल. षटक क्रमांक 5 व इथे झालंय समाप्त. दर्जेदार गोलंदाजी अभि इंदुलकरच्या माध्यमातून. धावसंख्येत आपण पाहतोय 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 56 धावा, 4 गडी बाद 56 धावा. 6 चेंडूमध्ये 5 धावांची आवश्यकता इथे असणार आहे. जरूर ऐसा नज़ारा देखकर मुझे देवरुख कुसुम की याद आई. वहाँ पर मैं एक प्रतियोगिता कवर कर रहा था जहाँ पर 6 में 3 रनों की ज़रूरत थी. मैडनोर किया था, शहजाद गेंदबाज थे जो कोल्हापुर को बिलोंग करने वाले माउली 11 की टीम थी. और पूरा क्राउड जो है घर की ओर रवाना हो रहा था. जैसे जैसे गेंदें डॉट हो रही थी वैसे वैसे मैंने माहौल को भी गर्म किया और आखिरकार वो मुकाबला आया था 1 में 3 और उस गेंद पर भी विकेट मिली. और उस गेंदबाज को सच में कंधे पर लेकर पूरे ग्राउंड में जो है नचाया गया. होना भी चाहिए, फाइनल का मुकाबला था. और यहाँ पर भी क्या वही नज़ारा देखने को मिलेगा. आने वाली गेंदें रहेगी 6 और जीतने के लिए चाहिए 5. 6 में 5 रनों की जरूरत. दोनों के लिए भी 50-50% चांसेस है. इससे पहले आपने देखा जब राहुल द्रविड़ खेला करते थे, सौरव गांगुली खेला करते थे, वर्ल्ड कप के समय में एक ऐड भी आई थी, ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ. और यहाँ पर भी मेरे दोस्तों 50-50 खाओ, पीपीएल के फाइनल में जाओ. और फाइनल में जाने के लिए आपको देखिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंधों पर जिम्मेदारी लेकर इस 5 रनों को मुकम्मल करना होगा. आने वाली गेंदें 6,
जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। लेकिन सराहना करूंगा अभी इंदुलकर की, जिस तरीके से जिम्मेदारी लेकर उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे। देखिए, जिम्मेदारी लेने वाले आपने कई लोग देखे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेकर उसको बखूबी निभाने वाले काफी कम लोग देखने को मिलते हैं। और इस बीच मैदान में अभी इंदुलकर ने एज ए कैप्टन जिम्मेदारी पूरी की है। गेंदबाजी के लिए इस समय प्रणय आते हुए, और इस समय 6 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत है। क्या होगा इस समय देखना होगा। छठी ओवर की पहली गेंद को हवा में खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, और व्हाट अ कैच। मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सामना संपलेला नहीं है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मंच के ऊपर अब जो है हस्तियां है वो भी थोड़े से सीट से ऊपर उठे थे, कह रहे थे क्या गया या नहीं, गया या नहीं, गया या नहीं। नहीं, इस बार कैच को लपका गया है। 5 गेंदे राजा सर, 5 रनों की जरूरत। अप्रतिम झेल, लाजवाब झेल इथे पाहायला मिळालाय आणि कुठेतरी तो क्षेत्ररक्षक मात्र या सामन्यानंतर त्याच्यावरती फायर केलं जाईल, कारण तो चौकार इथे अडवणं खूप आवश्यक होतं। त्यात 4 धावा इथे रोखल्या गेल्या असत्या तर सामन्याला आणखी रंगत आली असती, या सामन्यामध्ये कुठेतरी कमबॅक होऊ शकला असता, परंतु अजूनही सामना इथे संपलेला नाहीये। नक्कीच हवामान खात्याचा अंदाज होता की आजच्या दिवसामध्ये पाऊस पडेल, आणि मी सकाळच्या सत्रामध्ये निश्चितच सांगितलं की आज पाऊस पडणार। आमच्या कमिटीकडून देखील अंदाज होता, तो म्हणजे चौकार आणि षटकारांचा। आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की शेवटच्या चेंडूपर्यंत आज तुम्हाला एक सामना पाहायला मिळेल। त्यातील हा सामना असेल का पाहूया। 5 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 5 धावांची आवश्यकता। सर्व रसिक प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहिलंय, कोणता संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणार आणि वेदा स्पोर्ट्स यांच्या विरोधामध्ये पावस प्रीमियर लीग सीझन 9चा थरार खेळणार, हा येणारा काळ सांगून जाईल। यानंतर देखील एक अप्रतिम सामना असेल, तो म्हणजे रेस्ट ऑफ पावस आणि बेस्ट ऑफ PPL या दरम्यान। आणि त्यामध्ये जे चेंडू आहे 10x हा चेंडू महाकाली मावळंगे यांनी स्पॉन्सर केला, त्यांचं देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत। 5 गेंदे हैं, 5 रनों की जरूरत है। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, हर गेंद पर सोचने पर मजबूर करने वाला मुकाबला, ग्रैंड फिनाले के दरवाजे खोलने वाला मुकाबला, और इतिहास के पन्नों पर अपनी टीम का नाम दर्ज करने वाला मुकाबला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सर, जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है। इरादे मजबूत है, जीतने का जज्बा लेकर बीच मैदान में खेल रहे। आने वाली गेंदे 5, जीतने के लिए चाहिए 5। ये 5 का आंकड़ा किसके लिए लकी साबित होगा। देखा जाए तो किस्मत यहाँ पर बहुत कुछ आपको जो है नज़ारे देती है, और उस किस्मत के नज़ारे को अगर बदलना है तो आपकी नज़र बदलनी होगी। नज़र बदलोगे नज़ारे बदलेंगे, कश्ती बदलोगे किनारे बदलोगे। इस मैच की सिचुएशन को अगर बदलना है तो आपके माइंड को बदलना होगा, और वैसे ही खेल करना होगा। 5 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। और अब देखा जाए तो यूट्यूब पर भी संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अब तक सुबह से देखा जाए तो मेरे दोस्तों 7288 दर्शकों ने इस मैच का मजा लिया है। और अब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं 600 दर्शक जुड़े हुए हैं। यह पावस प्रीमियर लीग की सफलता है। 5 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। इस समय प्रणय गेंदबाजी मार्ग पर, क्या इस बार भी अच्छी गेंदबाजी हो पाएगी। फील्डर ने अच्छा साथ दिया इस बार, पिछली जो गलती की थी उसको सुधारा है। अब पिछले हुए गलती के बारे में सोचने से बेहतर यह होगा कि अब आने वाले समय के बारे में सोचो, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। इस बीच छठी ओवर की दूसरी गेंद, नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बार जोर से खेलना चाहते थे, गेंद डॉट निकलती हुई, डॉट गेंदे, हवा टाइट, पुंगी टाइट, मुकाबला टाइट। व्हाट अ मैच। 4 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 5 धावांची आवश्यकता। सामना रंगलाय, और यही तो पावस प्रीमियर लीग की पहचान है। क्या बात है, क्या बात है। प्रणय इस समय इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय बल्लेबाज है असद है, और इस समय और पिच गेंद हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया। अनिकेत काफी तेज आते हुए 1 रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है। इससे 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 57 रन बने हैं। आने वाली गेंदें रहेगी 3, और जीतने के लिए यहां पर चाहिए 4। 3 चेंडू 4 धावा, 3 गेंदे 4 रनों की जरूरत। 3 बॉल्स टू गो टू विन फ्रॉम 4 रन्स। मैच बहुत ही जबरदस्त निर्णायक मोड पर आकर रुका है, फाइनल में जाने वाला है, और यहां से जो हारेगा वो घर जाएगा, जो जीतेगा फाइनल खेलेगा। जरूर यहां पर ये नजारा क्या होता है। एक तरफ तुलजा स्पोर्ट्स की टीम जूझती हुई नजर आ रही, दूसरी ओर साई आदर्श पावस की टीम 1-1 रन के लिए अब मशक्कत करे। ऐसा लग रहा था साई आदर्श पावस की टीम 1 ओवर रखते हुए इस मैच को फिनिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं। अभी इंदुलकर के उस ओवर ने इस नज़ारे को ही बदल दिया। मैं हमेशा कहता हूं बड़े लोग
कुछ अलग नहीं करते, वो देखा जाए तो चीजों को ही अलग कर देते हैं और वही अलग करने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। 3 गेंदे हैं, जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 61 रनों का पीछा करते हुए यहाँ पर साई आदर्श पावर्स की टीम और बीच गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया था, अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, 1 रन पूरा किया है। ओहो क्या मॅच चल रहा है। जर मित्रांनो सामना आवडला असेल तर सामन्यासाठी जोरदार टाळ्या होणं गरजेचं आहे। हे यश आहे पावस प्रीमियर लीगचं आणि नक्कीच या 9व्या पर्वाच्या अंतिम फेरीमध्ये विराजमान होण्यासाठी दोन्ही संघ मैदानामध्ये झगडताना दिसत आहेत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आने वाली गेंदें रहेगी 2, जीतने के लिए चाहिए 3, 2 3 2 3। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 3 धावांची आवश्यकता। अटीतटीचा रंगलेला सामना। प्रणय अभी भी मैच किसी के भी पल्ले में जा सकता है। सेकंड लास्ट गेंद प्रणय की, इस बार हल्के हाथों से खेला है। 1 रन के लिए जरूर दौड़ा गया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, क्या दूसरे के लिए यहाँ पर दौड़ेंगे। इस समय रनों का विकेट मिला है, मिल गई विकेट जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ओहो हो व्हाट अ मैच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 1 गेंद और जीतने के लिए चाहिए अब 2 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। गेम ऑन यस, इथे गेम ऑन गेलाय कारण 1 चेंडूवरती धाबा इथे खर्च करायचे असतील 2। टाय झाली तर काय, टाय झाली तर सुपर ओव्हरचा तराडी आम्ही पाहायला भेटाल। सुपर ओव्हरचा तराड आहे, टाय झाली तर सुपर ओव्हर मध्ये तराड इथे पाहायला भेटेल। तुम्ही आपण पाहताय PPL चा तराड यानी की पावस प्रीमियर लीग। येतो टेलरचा पिक्चर अजून बाकी आहे कारण 1 चेंडूवरती धावा इथे खर्च करायचे असतील 2 धावा। जरूर बॉक्स ऑफिस के ऊपर पठान मूवीज बहुत ही ज्यादा तहलका मचा रही है, वैसे ही पावस प्रीमियर लीग टेनिस विश्व में तहलका मचाती हुई। 1 गेंद 2 रन, 1 गेंद 2 रन, 1 गेंद 2 रन। 1 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 2 धावांची आवश्यकता। आणि पाहायला गेलं तर विवरची संख्या देखील हळूहळू वाढताना दिसते आणि हे यश आहे पावस प्रीमियर लीगच्या सर्व सदस्यांचं, ज्यांनी अथक मेहनत घेतली आणि या 9व्या पर्वामध्ये देखील आम्हाला चांगला सामना पाहायला मिळतो। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। वेदा स्पोर्ट्स देखा जाए तो यहाँ पर जो है फाइनल में दस्तक दे चुके हैं, इसमें जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। मैच का टर्निंग पॉइंट इससे पहले आपने देखा होगा सेकंड लास्ट ओवर जिसमें अभी इंदुलकर ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। टाय झालं तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर हा आहे सुपर ओव्हर। 1 गेंद 2 रनों की जरूरत, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। प्रणय इस समय देखना होगा, 1 रन यहाँ पर पूरा किया है और यहाँ पर देखना होगा थ्रो यहाँ पर किया है और इस समय सुपर डुपर ओवर देखने को मिलेगा। व्हाट अ मैच। मित्रांनो प्रज्ञेश भाई सामना आवडला असेल तर जोरदार टाळ्या होऊ द्या सामन्यासाठी। व्हाट अ मॅच। राजा सर काय म्हणाले या सामन्याबद्दल? अप्रतिम सामना आणि त्याचबरोबर तो जो निसटलेला जो चौकार होता त्यामुळेच या जोश निर्माण झाला आणि जो निर्माण झालेला जोश आहे ना त्याचमुळे तुळजा स्पोर्ट्स संघ हा सामना बरोबरीत नोंदवू शकलाय। त्यामुळे तुमच्याकडनं होणाऱ्या चुका खूप काही शिकून जातात आणि त्यामुळे तुमच्यामध्ये जोश निर्माण होतो। तो जोश इथे निर्माण झालाय, हे क्रेडिट असेल संपूर्ण संघाला ज्यांच्या माध्यमातून केली गेली अप्रतिम फिल्डिंग। ही संधी इथे मिळते, पुन्हा 3री संधी इथे उपलब्ध होईल। तुळजा स्पोर्ट्स संघाला 2 संधी इथे मिळाल्या परंतु त्याच्यामुळे फायनल मध्ये प्रवेश करू शकला नाही तो संघ तुळजा स्पोर्ट, परंतु इथे मिळते 3री संधी आणि या 3ऱ्या संधीचं सोनं केलं जाईल का हे इथे आपल्याला पाहायचं आहे। अनिकेत कांबळेच्या माध्यमातून घेतला गेलेला झेल आणि कम्प्लीटली बिघडलेला खेळ इथे पाहायला मिळालाय आणि याचमुळे इथे आपण पाहतोय सुपर ओव्हरचा थरार। वैभव पावसकर जहां जहां है खेल का रोमांच तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुपर ओवर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा पावस प्रीमियर लीग 2023 सीजन 9 का ये दूसरे सेमीफाइनल का सुपर ओवर का मैच। सफवान वारगिरी सर, इनका अंदाजा 100% सही साबित होता हुआ। उन्होंने कहा था दूसरा मुकाबला जब बीच मैदान में चल रहा था कि सरदार भाई यह मैच टाई पर रुकने वाला है और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित होती हुई। अच्छा कार्य किया है, कैमरे के जरिए से हर एक दृश्य को आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। जो लाइव अपडेट दे रहे हैं हमारे सर्वेश भाई, इन्होंने भी जबरदस्त आपको जो है घर बैठे लाइव अपडेट दिया है और साथ ही साथ हमारे सीनियर कॉमेंटेटर राजचे काही नियम असतात, त्या नियमानुसार तुम्हाला त्या खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहेत। अमित
साई आकाश पावस, साई आदर्श पावस आणि तुळजा स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार आपल्या खेळाडूंची नावे आमच्या टेक्निकल कमिटीपर्यंत पोहोचवायची आहेत. नक्कीच पैसा वसूल सामना पाहायला मिळाला. नक्कीच या ठिकाणी एंट्री फी आहे प्रेक्षकांना, तरी देखील